वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाएंगे जिसमें एक 5 पिन सॉकेट होगा और उसके लिए एक स्विच और एक बॉल होल्डर के लिए भी एक स्विच और एक इंडिकेटर भी उस बोर्ड में होगा। तो सबसे पहले हम हमारा जो प्लास्टिक बोर्ड का जो रैपर है उसे निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हम हमारा जो 5 पिन का सॉकेट है उसे लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कट मार्क है दो तरफ उसे हम काट के निकाल देंगे। इस जगह में हमारा जो 5 पिन का सॉकेट है उसे लगाकर इसकी जो स्क्रू है, दो स्क्रू है, उसे हम लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम हमारा जो बाकी स्विच और इंडिकेटर है उसे भी हम स्क्रू की मदद से यहाँ पर लगा देंगे। स्विच ही और एक इंडिकेटर भी लगा देंगे हम सारी सॉकेट और स्विचेस इंडिकेटर को लगाने के बाद यहाँ पे हम सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में हमारा जो एसी सप्लाई हो उसे देंगे। तो हमारा जो ब्लू वायर वो है पॉजिटिव और फेज वायर है, तो उससे हम इंडिकेटर एक टर्मिनल में लगा देंगे इंडिकेटर। और जो ब्लैक वायर है वो हमारा न्यूट्रल वायर और नेगेटिव वायर, हम ब्लू वायर को एक टर्मिनल में लगा देंगे जो कि हमारा जो फेज वायर है। जो ब्लैक और जो न्यूट्रल वायर है उसको हम एक दूसरी पिन में लगा देंगे, इंडिकेटर की दूसरी पिन में। अब एक ब्लू वायर, छोटा सा ब्लू वायर लेंगे जिसको हम हमारे जो दो स्विच है, दो स्विच की दो टर्मिनल और हमारा जो इंडिकेटर की जो फेज पिन है उसे कनेक्ट करेंगे। तो तीनों पिन में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे जो वायर को बीच में थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे, उसकी जो कवर है उसे कट करके निकाल देंगे। स्विच को दोनों पिन और इंडिकेटर की जो फेज पिन है उसे कनेक्ट कर देंगे। इसको हम हमारा जो 5 पिन का सॉकेट है उससे कनेक्ट करेंगे। तो पहले एक छोटा सा वायर लेंगे जिसको हम स्विच की दूसरी पिन और जो हमारे 5 पिन का सॉकेट है उसकी एक पिन में कनेक्ट करेंगे। स्विच के थ्रू से जो फेज करेंगे करंट का जो वायर है वो कनेक्ट हो गया है। तो अब हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे 5 पिन की दूसरी पिन में। ब्लैक वायर ले लेंगे जिसको हम
इंडिकेटर की जो हमारा जो न्यूट्रल पिन है उसमें हम कनेक्ट करेंगे, और एक टर्मिनल वायर का हम जो हमारा जो 5 पिन सॉकेट है उसकी दूसरी पिन में कनेक्ट करेंगे। अब हमारा जो 5 पिन का सॉकेट है उसका जो सर्किट स्विच के थ्रू से कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो दूसरी स्विच रह गया है उसको हम हमारा जो बॉल होल्डर है उससे साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस स्विच को हम बॉल होल्डर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमारा जो होल्डर है उसको हम ब्लू वायर और ब्लैक वायर दोनों कलर के वायर में कनेक्ट कर देंगे दो पिन में। होल्डर की जो ब्लैक वायर है उसको हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसको हम इंडिकेटर की पिन और जो हमारा जो 5 पिन का सॉकेट है उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि न्यूट्रल है। और हमारा जो बॉल होल्डर की जो फेज वायर जो ब्लू वायर है उसको हम हमारा जो दूसरी स्विच है उसकी पिन में कनेक्ट करेंगे जो कि फेज वायर के साथ कनेक्ट हुआ है। अब हमारा जो सर्किट कंप्लीट हो गया है, हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो भी उसका सर्किट जो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम हमारा उसका जो कवर है उसको लगा देंगे। कवर को लगाने के बाद हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं। इसको अब हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में पावर सप्लाई देने के बाद स्विच ऑन करते ही हमारा जो 5 पिन का सॉकेट है उसमें करंट आता है, और यहाँ पे जो दूसरी स्विच है उससे हम ऑन ऑफ करते ही हमारा जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होता है। स्विच को ऑन ऑफ करते ही हमारा जो बल्ब ऑन ऑफ होता है।